ठीक है, वो किसकी कली दे दोगे? बच्चों लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अगर आप लोगों को याद है? We did some question based on the binding energy and binding energy per nucleon, mass number, nuclear stability. Do you remember or not? N by Z ratio. Last Friday. Do you remember anything? Say no. Okay, let's solve one easy example. Right, binding energy per nucleon versus mass number A. लाइव कर दिया मैम मैंने. For nuclei shown in figure. पानी A, B, C and D. चैट फैकल्टी नाम है उसका, नाम बदल दीजिए. are 4 nuclei indicated on curve. The process that would release energy is. एक ऐसी प्रोसेस आपको बताना है जो एनर्जी रिलीज करेगी. एनर्जी रिलीज तभी होती है जब डॉटर न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बच्चों any chemical reaction, any nuclear reaction will release energy only if daughter nuclei are more stable. Could you understand that? Huh? If daughter nuclei are less stable, means you will have to supply energy. Very good question. C can convert into 2D. A can convert into C and D. A can convert into 2C. B can convert into C plus D. The concept is nuclear reaction can release energy only when products are more stable as compared to reactant. Now guess what is your answer, बच्चों? In chat faculty you can send message. Charger. Chinmay, are you there? Lot of students are absent. आप तो ग्रुप में डाल दीजिए, एक बार आ जाएंगे जिसको आना होगा. प्रखर, आर यू देयर? प्रखर? No, he is absent. Send answer in chat faculty. सर आंसर नहीं सेंड कर पा रहे हैं. ओके, बोल के बता दे. 1. A. Okay. C can convert into 2D. A तो आंसर हो ही नहीं सकता. क्यों? Why A cannot be the answer? Explain, Anushka. Why A is wrong? Why first one is wrong, Anushka? Am I audible to you?
और उसका अपार तू बता दे। टू के बराबर हो जाएगा। आवाज कट गई, फिर से बोलो ना। ओके, मैं इसमें से क्या ऑफ कर दूं तो तुम लोग मैसेज भेज पाओगे? समझ ही नहीं आ सर रहा। अगर आप साइड फैकल्टी को को होस्ट बना दे तो। अच्छा, ओके, थैंक यू भाई। कहाँ है चैट फैकल्टी? आ जाओ सामने। ये मेक होस्ट, चलो होस्ट बना देते, ये भी क्या याद रखेगा। ओके, आई थिंक नाउ यू कैन सेंड मैसेज। ट्राई। हाय, हाय एवरीवन। Anvit, can you send a message now? बच्चों, A cannot be answer because I said nuclear reaction will release energy only if products are more stable than reactants. So C is already more stable because it is at the top of binding energy per nucleon. So if you make 2D from C, means your product is less stable. So if you want to make D from C, you will have to supply energy. Am I right? If you want to make D from C, you will have to supply energy. Am I right? बोलो, मुझे जवाब दो। Yes, sir. हाँ, तो this is not possible here. उल्टा मिलना तो छोड़ो, उल्टा देना पड़ेगा एनर्जी। अब लेट्स टॉक अबाउट ए। ए बदल गया सी और डी में, फिर से कंफ्यूजन है। एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। अगेन आई कैन नॉट से एनीथिंग 100% श्योर, है ना? तो मैं थोड़ी देर के लिए ये ऑप्शन इग्नोर कर रहा हूं। अगेन आई एम लुकिंग एट आंसर थर्ड। ए से 2C बन जाए, बिल्कुल संभव है। ए से 2C, देखो, ए इज लेस स्टेबल, एम आई राइट? ए इज लेस स्टेबल, एम आई राइट? And C is more stable. So when you form 2C from A, the product is more stable, hence it will release a lot of energy. So confirm answer is third. Third, Anushka gave correct answer, and Nitish and Anushka, only two students could give correct answer. Good. आगे बढ़े। मेरा भी सही था सर। कार्तिक का? यस सर। अरे वाह, अरे वाह। आगे बढ़े। Right, this question, I like this question very much. The binding energy of alpha particle. Now what is alpha particle, बच्चों? Helium without electron cloud is 7.047 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैम सारथी वाले में देख लेना, हाँ, राजुल से पूछ लेना, मेरी क्लास तो नहीं है। पर न्यूक्लियन and binding energy of deuteron is 1.112 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये पर न्यूक्लियन का मतलब समझते हो ना तुम लोग? Then in fusion reaction, this reaction is a reaction on the surface of sun, one of the reaction.
सन की सरफेस पे ये हो रहा है प्लस क्यू वैल्यू. ओके, सो व्हाट इज क्यू? कर लिया क्या हमने ये क्वेश्चन? यस सर। ओ, पहले बोल देते हैं. सेम टू सेम किया था क्या? यस सर। ए आंसर है सर इसका. ये आंसर है. ओके, सॉरी बच्चों ना, सॉरी, आई एम सो सॉरी. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. न्यूक्लियस ए डिवाइड्स, बहुत फेमस है ना वो क्वेश्चन, इनटू टू न्यूक्लियाई B and C in a fission process. Their binding energies being EA, EB and EC. A टूट गया B और C में और उनकी बाइंडिंग एनर्जी EA, EB और EC है. देन मजेदार सवाल, EB plus EC is greater than EA. EB plus EC is less than EA. EB plus EC is equal to EA. Okay, अपार ने आंसर दे दिया है and I think he is correct. EB minus EC is equal to EA. One student already gave answer. Two student gave answer. Very good. Nitish, you are wrong. Ganesh, you are correct. Now let's read question. Aryan, you are correct. Clap for Aryan. Very good. Nucleus A divided into two nuclei B and C in a fission process. Their binding energy being. Bacho, tell me, A is parent nuclei and B and C are daughter nuclei. So who is more stable? Who is more stable? Do you agree with this point? Otherwise, nuclear reaction होगी नहीं. Huh? Anushka, if they have same binding energy, then what will be Q value? And without Q value, nuclear reaction is not possible. Understood, Anushka? Yes sir. There should be some Q value. Now tell me, B and C are more stable as compared to A. Do you agree? Everyone agrees with me. Click on yes. If everyone agrees with me, click on yes. B and C are more stable as compared to A. So B and C must have more binding energy. B and C must have more binding energy because they are stable, comparatively more stable than A. And I told you a nuclear reaction is possible only when products are more stable as compared to parent. So answer must be 1. Could you understand that? क्या कर रही श्रेया? दो आंसर क्यों दे रही है? समझ गए? Done? Yes sir. Okay. Now, give me a minute. I'm trying to find good question for you.
The binding energy per nucleon for deuterium and an alpha particle are x1 and x2 respectively. The Q energy released in reaction, वही फेमस रिएक्शन, दो हैवी हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना लेंगे और बहुत सारी एनर्जी. So what is Q value? Okay, but now still you are confused, Shreya. That's why we are solving a lot of questions. Don't worry, Shreya. Okay, it is confusing, it is difficult, it is interesting as well. Now, if you have revised your copy, I told you formula of Q value based on binding energy. I will tick. हाँ अनुष्का, कितनी देर बाद. अच्छा 3 और 3 का नहीं सेम है, 3 नहीं है वो 4 है. Q value is equal to total binding energy of daughter minus total binding energy of parents. Okay, so here 2x1, 2x1, here 4x2. So daughter has total binding energy 4x2 and parents have total binding energy 4x1. You can take 4 common, x2 minus x1. This is final formula. Keep this formula in your mind. Okay, सारा यही बताया था ना मैंने. Are you there, Sarah? Yes, sir. Recoil speed of daughter nuclei वाला बता दिया मैंने. Which we did recoil speed based question. Okay. आगे बढ़े. कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे. Am I right? A nucleus of mass 220 AMU in free state decays to emit alpha particle. Kinetic energy of alpha particle emitted is 5.4 mega electron volt. The recoil energy of the daughter nucleus is
Try to give me answer. 0.25 mega electron volt, 0.5 mega electron volt, 0.1 mega electron volt, 0.75 mega electron volt. A nucleus of mass 220 AMU in free state decays to emit alpha particle. Okay, suppose this is X, 220 AMU. This decays to lose alpha particle in form Y, 216 plus alpha particle, that is He42 plus Q value. So the energy of alpha particle emitted is 5.4 mega electron volt. So this has 5.4 mega electron volt energy. So what is energy of this? It's an easy question, I think. Isme, I already told you the Q value is present in the form of kinetic energy of daughter nuclei. So can I say that kinetic energy of Y plus kinetic energy of alpha particle is equal to Q value? Yes or no? Come on, tell me yes or no. Click on yes. Yes, sir. Q value is present in the form of kinetic energy of daughter nuclei. Now, the main thing is that the parent nuclei is at rest. Because parent nuclei is at rest, that's why linear momentum of the system is conserved. So we can say momentum of Y is equal to negative of momentum of alpha particle. Do you agree with this? From conservation of linear momentum. क्योंकि initial momentum तो zero है, तो final momentum zero होने के लिए अल्फा का मोमेंटम और इसका मोमेंटम एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं? So that net momentum zero आ जाएगा. Could you understand that or not? From conservation of linear momentum. Could you understand that, बच्चों? Yes, Okay, sir. yes. Okay, that's good. That's good. So we can say that Y and alpha particle have same linear momentum. Improved equation B. So write kinetic energy in the form of linear momentum. You can write P square by 2m. Am I right? Am I right? We can write kinetic energy Yes, like sir. that. That's good. So kinetic energy of Y, Key, here you can write kinetic energy of Y plus kinetic energy of alpha is equal to Q. So kinetic energy of Y, I can write P square by 2m into mass of Y plus P square into 2m mass of alpha particle is equal to Q value. Okay, let's take P common. But I want kinetic energy of Y, okay. Let's take P square common. Will P square by 2 common, will get mass of Y plus mass of alpha particle upon mass of Y, mass of alpha particle is equal to Q value. So you got value of momentum as 2 mass of Y, mass of alpha particle upon mass of Y plus mass of alpha particle into Q value, P square. So what is kinetic energy of alpha particle? P square divided by 2 mass of alpha particle. Okay, so let's put value of P square, बच्चों. 1/2 mass of alpha particle into let's put value of P square m by m alpha. Q value divided by my plus m alpha. 2 got cancelled, m alpha got cancelled. So it's a very big calculation, and finally you got kinetic energy of alpha particle as mass of Y upon mass of Y plus mass of alpha into Q value. So mass of Y upon A. Actually, mass of Y plus alpha. Mass of Y plus alpha is actually A. Right? Am I right? Could you understand what I mean to say? Huh? A into Q value. So in the same way, kinetic energy of Y can be written as mass of alpha particle upon A into Q value. Could you understand these two formulas? Kinetic energy of alpha particle is equal to Q value divided by total mass into mass of Y. Could you understand that? Click on yes, everyone. I gave you a very fast formula. Okay.
So now we have kinetic energy of alpha particle, we already have, and we want kinetic energy of y. So let's divide kinetic energy of y divided by kinetic energy of alpha particle. So what we will get, q by a is going to get cancelled. Here you'll get m alpha upon m y, right? So you want key. So this kinetic energy of key must be equal to m alpha upon my into kinetic energy of alpha particle. Okay, so kinetic energy of y is equal to 4 upon 216 into, what was the kinetic energy of alpha particle, boys? 5.4 mega electron volts. When you solve this, what you'll get? Come on, get it. Come on, solve it. 0.1. 0.1 mega electron volts. बेटा इसे कहते हैं हिप हॉप समझे? मजा आई? Huh? Now you lock this formula. Shreya, you got confused? Shreya, VN? Are you still confused? Medical students? No, sir. Okay. Copied everything? Copied everything? Yes, sir. Now next time, this is a shortcut. Write a shortcut for next time. Suppose x converted into y plus alpha particle plus q value. So you can write kinetic energy of alpha particle is equal to mass of y upon a into q value. And kinetic energy of y is equal to, बताओ जल्दी, q value upon a into mass of alpha particle. Understood बच्चों? जिसकी एनर्जी लिखनी है, मास उसके भाई का लेना है, उसके बाजू वाले का लेने का है. क्या? Understood or not? So you can, next time onward, you can use this as in formula. Now, it's time for nuclear reactor. Now write heading. Nuclear reactor. But in nuclear reactor, we perform fission reaction. We take very heavy nucleus in which n is very greater than z. If number of neutron is very greater than number of proton in a nucleus, then this nucleus must be unstable. तो यूरेनियम में क्या होता है, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से, इसलिए यूरेनियम अनस्टेबल है. अब उसकी इस अनस्टेबिलिटी का हम फायदा उठाते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं दो छोटे न्यूक्लियस में और वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है. अंडरस्टूड राइट? न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर 12th CBSE and Karnataka, both. Write a nuclear reactor is based upon controlled nuclear chain reaction. It is based on a controlled nuclear chain reaction when uranium 92-235 undergoes fission after bombarding by a न्यूट्रॉन. हम एक न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं यूरेनियम को, मोर न्यूट्रॉन बन जाते हैं, मोर न्यूट्रॉन on an average
2.5 neutrons per fission. Produced. So what happened? You just bombarded a neutron to a uranium, and what happened? This neutron will go and collide with the uranium, and due to fission reaction you will get more neutrons, and then these more neutrons will keep colliding with the existing uranium, and the reaction will keep going. You understand that? Could you understand that? In class 10th you did this. See what will happen. Imagine you have uranium, purified uranium 23592 plus neutron. You bombarded neutron, you will get what will be the byproduct. अजीब अजीब नाम है इनके. Give me a minute. I will tell you all the byproduct. Beryllium 14156 plus krypton 9236 रटना पड़ेगा, plus 3 neutron plus Q value. So what will happen? You bombarded 1 neutron and you got 3 more for free. So what will happen? 1 neutron will go and collide with the uranium and will create 3 more neutrons. These 3 more neutrons will again collide with uranium, and they will make again these reactions will get repeated, and again you will get 3 neutrons. Could you understand that? कितना तेज रिएक्शन हो जाएगा? To absorb these neutrons, we use heavy water or control rod made of कंट्रोल रॉड्स. किसकी बनती है मैं ये भूल गया. किस मटेरियल की बनती है बच्चों कंट्रोल रॉड्स? We use heavy water to slow down these fast moving neutrons, and there is one more thing we use. I think नाम याद नहीं आ रहा कौन सा मटेरियल का रॉड था. I'll tell you जब याद आएगा तो बता दूंगा. Okay, this kind of reaction and you will get a lot of Q value. Understood? हाँ ये तो बन ही रहा है, सारी रिएक्शन में ये तो हो ही रहा है. चलो लिखते हैं आगे. थोड़ा स्क्रॉल कर लो ऊपर सर. ये रिएक्शन पूरी लिखना तुम लोग, ऐसे मत लिखना. You write complete reactions here because I do not have that much space. Understood na? Every time you will write this if you have time. डन सर. Okay. Now write note. It's an important note. The fast moving neutrons are useless. See this. Neutrons liberated in fission unless
slowed down will escape from reactor, छोटे तो होते ही हैं, without interacting with uranium nuclei. फिर क्या हुआ, ज्यादा तेज चलने वाले जो न्यूट्रॉन थे वो तो बिना टकराए निकल गए, तो उनको हमने थोड़ा सा उनका स्पीड कम किया. ठीक है, अब उनका स्पीड कैसे कम किया, आप में से कोई बताएगा? Anyone knows that? Hello, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. I think cadmium rods, rod of some particular material we use, I forgot name. No one knows. Moderator. खैर, graphite, yes, graphite rod. By using graphite rod, we make fast moving neutron to thermal neutron, because thermal neutron can only react with uranium. Thermal neutrons are not moving very fast. Okay, bachcho? Understood? Now, right, the chain reaction once started will remain steady, accelerate or retard will depend upon the neutron production, right? And this neutron production factor we decide by rate of production of neutrons divided by rate of loss of neutron. If the value of K is more than 1, then reaction is uncontrolled. If the value of 1, K is 1, then reaction is controlled. And if the value of K is less than 1, reaction will become slow. And so after some time, nuclear reactor will become off. Like this. You can write the chain reaction, copy. Chain reaction once started will remain steady, accelerate or retard will depends on multiplication factor K. K is equal to rate of production of neutrons divided by rate of loss of neutrons. So if bacho K is very greater than 1, then reaction became unstable, फूट जाएगा. K is equal to 1, then reactor is said to be critical, which is for steady power operation. मतलब सब ठीक है, everything is perfect. If K is 1, if value of K is very greater than 1, then reactor may explode बच्चों, there is no doubt. यूक्रेन में हुआ था 1986 में, यूक्रेन का रिएक्टर फट गया था बच्चों.
बहुत रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया था, बहुत लोग मर गए थे। रिमेंबर इन 1986 इन यूक्रेन ये रिएक्टर फट गया था। ओके, नाउ राइट अनदर नोट। टू रिड्यूस value of k, to reduce value of k, we use control rods. Control rod made of neutron absorbing material such as cadmium, such as cadmium। और बच्चों कैडमियम ना सोनार लोग गोल्ड में भी मिलाते हैं जिससे ज्यादा मुनाफा कमा पाए। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी डाउट टिल दिस? हेलो, No doubt, sir. ओके। अब मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बना के बता रहा हूं, देखना ध्यान से। हाँ, मेरे साथ बनाओ। एवरीवन मेक दिस न्यूक्लियर रिएक्टर विथ मी। अच्छा, मेरे को एक डाउट है, कैडमियम की रॉड कब यूज करते हो, कंट्रोल रॉड कब यूज करते हो? व्हेन यू यूज कंट्रोल रॉड टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ के, एंड व्हेन यू यूज हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट रॉड, ये जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है ना बच्चों, इनको स्लो करके काम का बनाने के लिए। तो हैवी वाटर क्या करता है, रिएक्शन होने देता है, ये बहुत तेज मूविंग न्यूट्रॉन को थोड़ा स्लो करता है जिससे ये यूरेनियम से टकरा के रिएक्शन करवा पाए। अदरवाइज इफ दीज न्यूट्रॉन्स आर मूविंग वेरी फास्ट देन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड श्रेया? सो वी आर Yes, ट्राइंग sir. टू कंट्रोल न्यूट्रॉन इन टू डिफरेंट वेज। The very first way is to slow down the neutrons so that they can react with the uranium. For that, we are using heavy water and graphite rods. And in the case 2, we are trying to absorb neutrons by cadmium rod to switch off reactor or to slow down reactor. Understood? Now, draw diagram. Simplified outlines of nuclear power plant. Right heading, nuclear power plant. शुरू करते हैं रिएक्टर के कोर के साथ। Please make diagram with me. This is reactor core. This is water pump. यहां से आपने पानी भेज दिया अंदर। ओके, यहां सब जगह पानी पानी हो गया। Blue है पानी पानी। ब्लू है पानी पानी और दिन भी। तो ये पानी रिएक्टर के पास जाके गर्म हो रहा है, नहाने लायक गर्म नहीं हो रहा है, भाप बन गया, जल जाओगे। तो बहुत गर्म पानी, ओके, कन्वर्ट इनटू द वेपर।
फिर ये पानी बाहर आ रहा है, हॉट वाटर। वेरी हॉट वाटर। सर पाइपलाइन के लिए ओपन तो करो सर। एक मिनट, यहाँ पे ये लो, हाँ सर। यहाँ लीकेज है, एक मिनट देखना। हाँ ठीक हो गया। ठीक है, ये वापस से इसी पंप से जुड़ गया पानी। जहां पे एक्चुअली हमारे पास एक बड़ा डिब्बा था। ये तो घूम फिर के वहीं पे आ गया सर। हाँ ना, रुक जाना तो, रुक जा, अभी बन रहा है वो। ये बड़ा डिब्बा है। अब ये जब स्टीम, बहुत गर्म स्टीम इससे निकली है ना, हॉट वाटर या बहुत हाई प्रेशर पे पानी होगा ये, हॉट वाटर। ये गया इसमें, ये इधर तो अंदर पानी पानी भरा था सब में बच्चों। तो यहां से आपने स्टीम बना दिया। दिस इज नोन एज स्टीम जनरेटर। इसमें से गर्म पानी निकला तो स्टीम बन गया। ठीक है, बन गया ना स्टीम। फिर स्टीम इधर से गया, स्टीम जा रही है यहां से, जो कि टरबाइन घुमा देगी। अब भरोसा रखो, हाई प्रेशर स्टीम। This high pressure steam will go and it will turn turbine, will start turbine. Once turbine start rotating, this is turbine. High pressure steam will start rotating turbine. मेरी उधर तो नहीं ना भोपाल में भाई, पक्का? ओके, याद आ गया। थोड़ा छोटा पाइप है भाई। फिर हम इसको, स्टीम को फिर ठंडा करेंगे। ठीक है, यहां से हम कूलेंट भेजेंगे स्टीम कंडेंसर में। कूलेंट बाहर आ जाएगा, पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा। ये स्टीम टरबाइन से घूम के और फिर इधर आ जाएगी। समझ गया बच्चों? हाँ, Yes, sir. तो फिर
फिर ये स्टीम को यहां से निकालेंगे और पंप के थ्रू यहाँ भेज देंगे। प्लीज इसको बनाना सीख लें, अब किस्मत खराब हुई तो 5 नंबर में आ जाएगा। So 5 marks question. Turbine will give power to the electric generator. You get 2 wires for alternating current. This is your nuclear reactor. Any doubt in this? Cool water. Understood बच्चों? Yes, sir. अब ऐसे लिखने पे आओ तो लिखते जाओ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। Remember all these points which we from where we started a nuclear reactor. Okay, you'll have to write everything. Till this you'll have to write everything. You'll have to make diagram, and then if it is a 5 marks question, you'll have to write about fuel, which fuel you are using. Tell me. Usually we use uranium-235-92, or in India we use plutonium-239. In the world only 3 countries are using plutonium, including India. Only 3. Fuel in a nuclear reactor. एक अमेरिका होगा सर, इंडिया होगा और जापान। पता नहीं जापान है कि जर्मनी है। जर्मनी या फ्रांस भी बहुत आगे है बच्चों इसमें। Contains only 0.7% of uranium. The remaining 99.3% being U-238, which is not fissionable. हो गया? Done? डन Now सर। write second point, moderator. What is moderator? What is use of moderator? These moderator try to slow down neutron. The neutron produced in the fission are fast with kinetic energy of order of 2 mega electron volt, right? The neutrons, very important point, very, very important. The neutrons produced in reaction are fast, okay, with kinetic energy of order of 2 mega electron volt. But fission is induced most effectively by thermal neutrons.
with kinetic energy 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो थर्मल न्यूट्रॉन हमारे काम क्या है? कौन स्लो डाउन करता है? मॉडरेटर. मॉडरेटर का काम क्या है? इट शुड नॉट एब्सॉर्ब न्यूट्रॉन, इट शुड ओनली डिक्रीज स्पीड. सो कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर्स आर, कैन यू टेल मी? Commonly used moderators. Shreya, I told you names. Heavy water, Graphite rod. graphite, and beryllium oxide. They should not absorb neutron, they should only slow down neutron. Okay. Now you write by your own about coolant control rods, coolant and shielding wall. You write by your own, or in the next class I'll explain you. Okay. That's it for today. I think you understood everything what we discussed in our class today. In the next class, I'll tell you nuclear fusion reaction also. And then we will solve some questions based on the power of nuclear reactor. Okay. You can start solving your module now. You please solve your module, leave all radio activity question you can leave, everything else you can do. Okay. Okay, bye. Bye, bachcho. Take care. Good night. Bye. Thank you, अच्छा sir. लगेगा.